अच्छे हूँ भैया जी, आप बताइए आप कैसे हैं। लाइक डन कर लीजिए। हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। लाइक डन कर लीजिए भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव में। सभी लोग कमेंट करते रहिए और लाइक डन कर लीजिए। सोने का सोने का घोड़ा, चांदी की लगाम, भाभी जी राम राम। राम राम भैया जी, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। सुनील जी कैसी हो भाभी जी? बहुत अच्छी हूँ भैया जी, आप बताइए आप कैसे हैं सुनील भाई।
आप कहाँ से हो भाभी जी? हम लखनऊ से हैं भैया जी, आप बताइए। राधे राधे दे दे। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? लाइक भी करते चलिए, सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर लीजिए। मैं एमपी के भाभी जी। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुपर हो, सुपर हो, सुपर हो, सुपर। यस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। राधे राधे दीदी, आपको 3 शॉर्ट वीडियो में लाइक कमेंट के साथ ज्वाइन अभी रिटर्न कर देना। भैया जी तुरंत तो रिटर्न नहीं करते हम, लेकिन आपका रिटर्न मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। आपको हम सुबह तक रिटर्न कर देंगे, 100% कर देंगे। लेकिन तुरंत रिटर्न न मांगा करिए, क्योंकि तुरंत रिटर्न से अन हो जाता है, आपका भी मेरा भी हो जाएगा। बाकी आपको रिटर्न मिल जाएगा, और रिटर्न के लिए परेशान मत होइए। अगर आपने कमेंट किया है तो रिटर्न मिल जाएगा। राम राम। राम 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 राम। हेलो हेलो मैडम। हेलो भैया जी, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से हो? लखनऊ से हैं भैया जी हम।
लकी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भौजी सो रही। भौजी सो रही। आपको हम सोता हुआ दिख रहे हैं। मैं आ गया। मैंने आपको देख लिया भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुमसे बात करने। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सोना मत। अच्छा जी, पूरी रात जगेंगे हैं। भौजी के देवर पूरी रात जगेंगे, सुबह काम कौन करेगा? पक्का। आपको पता है हम झूठ नहीं बोलते हैं। जब तक नींद नहीं आएगी तब तक जगेंगे, नींद आएगी तो सो जाएंगे। तो झूठ बोलना गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भैया कितने बजे आएंगे? अभी फ़ोन करेंगे। तो बताएंगे। जब तक हम लोग बात करते हैं। ओके। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल ओके। राधे 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 राधे।
साथ में। नहीं, मई में, मई। दीपक, राधे राधे दीपक भाई, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में। लाइक डन, थैंक यू। लाइक करने के लिए थैंक यू। हम लखनऊ से हैं दीपक भाई। सपोर्टिंग कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लकी भैया। और सुनाओ भाभी जी। और तो सब बढ़िया है भैया जी, भगवान की कृपा है, सब मस्त है। क्या हाल चाल बा भाऊजी? राधे राधे। बहुत बढ़िया है भैया जी। ठीक है, ओके, हम आपको रिटर्न कर देंगे भाई। तबीयत पानी बढ़िया है भाऊजी। जी भैया, तबीयत पानी एकदम बढ़िया है। आप सच, थैंक यू। सब एकदम बढ़िया है। राधे 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 राधे। दीपक कुमार, भाऊजी हमें ज्वाइन कर लो, हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन हम आपको ज्वाइन कैसे करें भैया जी? अभी तो हमारा लाइव चल रहा है, आप ज्वाइन कर लो, हम आपको रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। अच्छा, गरीब आदमी हैं तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप? आपको ब्लू कर दें? आप ज्वाइन कर लो। चलिए, दीपक भाई आपको ब्लू कर दिया है, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, जिसको जिसको ज्वाइन करना हो। क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। अच्छा जी, मैं आपको ज्वाइन कर दिया हूँ भाभी, और आपकी वीडियो पर शॉर्ट कमेंट भी कर दिया हूँ। ठीक है भैया जी, हम आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन हम सभी का रिटर्न सुबह करेंगे।
सबको सुबह रिटर्न कर देंगे। आप लोग रिटर्न के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि तुरंत रिटर्न वैसे भी नहीं लेना चाहिए। राधे 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 राधे। भाऊजी चाहूँ कि रुकूं। अब भैया जी आपको नींद आ रही हो तो हम कैसे मना कर सकते हैं। सो जाइए। अगर नींद नहीं आ रही है तो सपोर्ट कर दीजिए। भाऊजी परेशान होने की बात नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट ही आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल भैया जी, लेकिन पता है कितने लोग हम रिटर्न नहीं करते हैं। हमारा ज्वाइन कर लेते हैं हम उनको, लेकिन रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं, बाकी कर देना चाहिए ईमानदारी से रिटर्न। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो सबका रिटर्न कर देना चाहिए आपको। हे भगवान, तो हम कैमरा बंद कर दें क्या भैया जी? देख नहीं भाई, हमारी वजह से किसी को परेशानी हो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हेलो भाभी जी। हेलो भैया जी। नमस्ते। सोनू। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। कहाँ से हो आप? सोनू शुक्ला। हम लखनऊ से हैं भैया जी। आप बताइए आप कहाँ से हैं सोनू जी? मैं देवरिया से डॉक्टर हूँ। देवरिया। और जी, मैं यही हूँ, आन हूँ। ठीक है देवर जी, धन्यवाद। आप आन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवरिया इधर जो है अमेठी तरफ। अच्छी बात है, आप डॉक्टर हैं तो। गोरखपुर के पास है जी। अच्छा, गोरखपुर देवरिया, ठीक ठीक, ओके। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब जाएंगे तो बता के जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, हाय हाय कर रहे हैं आप? विनय। आपकी बिल्कुल बिल्कुल भैया जी।
पूरा भरोसा तो करते ही हैं। भरोसे पर ही लाइफ चल रही है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली तो भरी पूरी है भैया जी, किसी की कमी नहीं है, सब हैं हमारी फैमिली में। लो हाय लाइक दैन। आप कैसी हो मासी जी? आपकी बात पे तो हमको हंसी आती है बिटिया। हम अच्छे हैं मासी जी की बिटिया जी, मस्त हैं। दीपेश प्रणाम जी, गोर लागत बानी, कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। खुश रहो भैया जी, बहुत बहुत मस्त रहो आप। भगवान करे कभी आपको कोई दुख ना आए जी। का खाना हो गए कि ना? नहीं, खाना पीना हो गया भैया जी। आप मेरी मासी हो इसलिए मासी बोलती हूँ, और फिर क्या बोलूँ बताओ मासी जी। नहीं, आप मासी बोलो भाई। सभी लोग अपने अपने रिश्ते की मर्यादा बना के रखो। जिसके हम जोड़ते हैं वही बोलो भाई। आपका खाना पीना हो गया दीपेश जी? मैं तो होता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। भाभी माँ के समान होती है भैया जी, भाभी कोई गलत नहीं है रिश्ता। भाई नहीं हूँ मैं, छोटी बच्ची हूँ। अरे मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, दीपेश भैया को बोल रही हूँ। मैं तो जानती हूँ आप छोटी बच्ची हो, हमारी सुंदर सी परी हो आप, लाडो रानी। मेरी दीदी हो आप। मेरी दीदी हो आप। अच्छा जी, थैंक यू जी। ओके भैया जी। अरे भैया जी कहते कहते आदत गंदी हो गई है। हम रहुआ के प्रणाम ना कर सके कहा जी, रहुआ गलत लागत है नहीं भैया जी, ऐसा हमने कब कह दिया भाई? हमने तो आपको कहा आप खुश रहिए, मस्त रहिए। आपने हमसे पैर छू करके प्रणाम किया तो हमने आपको आशीर्वाद दिया। आप तो बहुत ही अच्छे हैं, दीदी नहीं भाभी। अरे भैया
मैं क्या, मतलब आप लोग हमें पागल करोगे क्या? नहीं, आपको तो नहीं कह रहे हैं भाई। ऊपर का कमेंट देखिए आप, लाडो रानी, ऊपर का देखिए। हमारे भैया जी कह रहे हैं क्या हम प्रणाम नहीं कर सकते हैं क्या? उनको कह रहे हैं कि प्रणाम करना कोई गलत थोड़ी है, जितने लोगों से आशीर्वाद मिले उतना अच्छा होता है। और इतने कायदे से आप बात कर रहे हैं, हमें बुरा क्यों लगेगा? हम दीपेश भैया जी को कह रहे हैं। वैसे भी अंग्रेजी थोड़ा सा हमारी ख़राब है। आप हंस रही थी इसके लिए मैं बोला जी। अरे वो हमारी आदत भैया जी, मासी के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी बात नहीं है, हमारी हंसने की आदत है। हमारे हंसने पर मत जाइए आप लोग। खुश रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी रानी बहुत बहुत तरक्की करें आप। भगवान करें माँ बाप का नाम रोशन करें। ऐसी औलाद उसको मिलती है जो नसीब वाला होता है। खाना खा लिया भैया जी। लाइक डन। मेरी मासी खुश तो खुश। ओके ओके ओके। मेरी गुड़िया रानी, इतना सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव कुश भैया, राधे 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 राधे। लव कुश भैया, आपने हमको ब्लू नहीं दिया, बस धर्म जय। आज भी हम आपके लाइव में आए थे, जब आपसे कोई कह रहा था कि इतना जल्दी जल्दी मत चलिए, नहीं गिर जाएंगे आप। तब हम भी थे आपके लाइव में, लेकिन आपके लाइव में कमेंट नहीं शो कर रहा था। कमेंट ओके। कमेंट हमने आज भी आपको किया है भैया, लकुश भैया। आज आज भी हमने दोपहर में कमेंट किया है। मुझे अच्छा जी, आपको ब्लू दे दें? ओके। लो, हमारी गुड़िया रानी को हमने ब्लू कर दिया भाई। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। जय श्री कृष्णा।
म्यूट करके हम बात कर रहे हैं। कहा जी हमारे भाया जी कहाँ बानी? आपके भाया जी आ रहे होंगे, अभी आ जाएंगे, शादी में गए हैं। नहीं, अब आवाज़ बंद नहीं है, अब आवाज़ खुल गई है। बंद कर देते हैं आवाज़ तो ऑन करना ही भूल जाते हैं। ओके। ओके, राधे राधे। रंजीत यादव, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं रंजीत जी, हम बहुत अच्छे हैं। काजी लगन की पूरी, लगन की पूरी तो इस समय चली गई है। सभी लोग खा रहे हैं। हमको डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो इसलिए हम घर में बैठ के लाइव ला रहे हैं। डॉक्टर ने कहा लगन की पूड़ी बिल्कुल मत खाइयो। राधे राधे गुड़िया रानी, राधे राधे। कहाँ से हो आप भाभी जी? हम लखनऊ से हैं भैया जी। लखनऊ से। ओके। रजनी जी किसी के शादी कराने गए हैं क्या जी? हाँ जी, आज किसी का कल्याण हो जाएगा। लखनऊ। देखो भैया जी, इंग्लिश हमें ज़्यादा समझ में आती नहीं है, झूठ बोलेंगे नहीं हम, इसलिए जितना समझ में आएगा उतने का जवाब मिलेगा, जो नहीं समझ में आएगा उसका नहीं मिलेगा। मैं मासी जी, मैं मासी जी न्यूज बैंड से हूँ, न्यूजीलैंड से हूँ। क्या लिख रहे हो? कहाँ से? अरे दादा, न्यूजीलैंड से हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं बिटिया रानी, कहीं से भी हो आप। बड़ी परेशानी है, मुझे हिंदी नहीं आती। आप क्या बताएं हम आपको? आपका तो आसान है, आप तो माइक का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, हिंदी में लिखना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में हिंदी कर लीजिए, माइक से बोल करके लिख दीजिए।
गुड मॉर्निंग मासी जी। अच्छा जी, अभी हम लोग सोए नहीं, आपकी मॉर्निंग भी हो गई। कैसे समझाएं आपको। फर्स्ट हुआ मासी जी। नहीं भैया जी, डिनर हो गया। लाइक डन। गुड नाइट जी। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, बाय बाय, बाय बाय। ओके, बाय बाय। हे भगवान। कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती तो अरे वो हिंदी नहीं आती तो आप सपोर्टिंग कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। हमारे गुड मॉर्निंग हुई सुबह 7:45। हिंदी में लिख रहा हूँ, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया जी, थोड़ा बहुत इधर उधर लिखने में अगर हो जाता है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हिंदी मुझे बहुत कम आती है। आप हमारे लिए हिंदी में लिख रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। राजू भैया, राम राम दीदी, राम राम राजू भैया, आपने अपना लाइव बंद कर दिया क्या? जय माता दी, जय माता दी। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे राजू भैया बहुत अच्छा बोलते हैं अपने लाइव में। हम तो इतना बोल ही नहीं पाते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी चीनी चेहरा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कितनी ये प्यारी आँखें। दीदी इतना बुद्धि कहाँ है बोलने को हमें। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा मत बोलिए। कितना देर लगता है हिंदी में टाइपिंग करने के लिए हमको। हे भगवान, क्या बताएं भैया जी। दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। अरे हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा है मेरे भाई। आप खूब खुश रहो, खूब मस्त रहो, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो हमारे भाई को।
कुछ सीख लें हम। नहीं, ऐसा मत बोलो मेरे भाई, बोलो ऐसा कुछ नहीं। हम सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे से सीखते ही रहेंगे। लाइव में आने के बाद पता चला कितने अच्छे अच्छे लोग मिले हमको लाइव में। बोलो बोलो बोलो, बोल तो रहे इतनी देर से। राजू भैया ज्वाइन कर लीजिए भैया। राजू भैया सरिता बहन को ज्वाइन कर लो। सरिता बहन है। बोलो 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 बोलो, कितना बोलें, मुंह दर्द होने लगता है हमारा बोलते बोलते। और बताइए दीदी, खाना खा ली हो? हाँ बहन, खाना खा लिए हैं। खाना खा करके लेटे हैं, सोने जा रहे हैं। दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं दीदी। बिल्कुल भैया बिल्कुल। लेकिन अभी तक हमको जितने लोग मिले हैं अच्छे ही मिले हैं, इस बात की हमको बहुत खुशी है। अच्छे लोगों से मिलने के बाद ये लगता है दुनिया बहुत अच्छी है। राजू भैया ज्वाइन कर लीजिए। राजू भैया सरिता बहन को ज्वाइन कर लीजिए आप। भाऊजी जय हो। ये देखो हमारे एक देवर जी हैं। जी हाँ दीदी। सरिता दीदी हमने खाना खा लिया है, चलो मैं चलता हूँ, मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे तो भैया जी मत लिखो, आप सपोर्टिंग कमेंट करो, इमोजी भेज दो। हेलो कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं भैया जी। मत लिखो आप, कुछ भी लिख के भेज दो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक अक्षर भी कमेंट में गिनती होती है, समझ रहे हैं? अगर इंग्लिश में लिखना है तो सपोर्टिंग कमेंट करो, जैसे 1 2 3 अक्षर दबा करके उसको आप कमेंट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कौन मुझे गायब करके फिर से गायब कर आपके जो लोग हैं दोस्त लोग। ये तो होता है भैया जी, लोग जोड़ लेते हैं बाद में अन कर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे अभी तक पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हो गए होते, सब खत्म हो गए धीरे धीरे। बोलो भाई, सरिता बहन को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। भैया हमको ज्वाइन कर लो भैया। मैं तो भौजी का देवर हूँ, छोटा वाला। अच्छा जी भैया, किसी को ज्वाइन किया करो ना तो बोल दिया करो, नोटिफिकेशन ऑन करके तब। अच्छा जी, नोटिफिकेशन के साथ ही ऑन करना ही चाहिए। दीदी के देवर जी आपको ज्वाइन कर रहे हैं, आप रिटर्न कर देना। हमारे देवर जी को मत ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे देवर जी की सपोर्टिंग आईडी है। सपोर्टिंग आईडी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए बहन, सरिता बहन। सरिता बहन, अगर आप हमें सुन रही हो तो सपोर्टिंग आईडी को आप ज्वाइन मत करिए। हमको लगता है ज्वाइन करने चली गई, सुना ही नहीं हमारी बात। भाऊजी आप मुझे सच में सरिता दीदी हमने आपको ज्वाइन कर लिया, प्लीज़ आप रिटर्न कर देना।
भाजी भैया देवर जी रिटर्न कर दीजिए। अरे देवर जी को कहाँ आपने ज्वाइन कर लिया सरिता बहन? देवर जी की सपोर्ट आईडी है, सपोर्ट आईडी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए सरिता बहन। राजू भैया नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ना। वो तो नोटिफिकेशन के साथ सभी लोग ज्वाइन करते हैं सरिता बहन, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबको नोटिफिकेशन के साथ ही ज्वाइन करते हैं। राधे 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 राधे। बीबी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सरिता आप तो मेरी भौजी ही लगती ना, ही लगती ना। क्या लिख रहे हो सरिता? आप तो मेरी भौजी ही लगती ना। दीदी आप तो हमारे लाइफ कभी आते नहीं हो, आप हमको रिटर्न भी नहीं दी। क्या मतलब? दीदी आप तो हमारे लाइव में कभी आते नहीं हो, ठीक, हमको रिटर्न भी नहीं दिखी। सरिता बहन लाइव में नहीं आते ये तो बात सही है, लेकिन रिटर्न नहीं किया ये बिल्कुल गलत है। रिटर्न तो हमने आपको कर दिया है, हमें अच्छे से याद है सरिता बहन, आपको हमने रिटर्न किया है। दीदी जी सरिता दीदी को बोलो आपकी मेरी लाइव स्ट्रीम 7 9 तक सुनती है और आप अपना सरिता बहन आपको राजू भाई ने ज्वाइन कर लिया, आप उनको रिटर्न कर दीजिएगा। भौजी की जय हो। गुड नाइट जी, गुड नाइट। आप सपोर्टिंग कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख करके। भैया चेक कर लीजिए रिटर्न कर दिया है। हे भगवान सरिता बहन अभी तुरंत क्यों रिटर्न कर दिया भाई? मैं तो बाय बाय। अच्छा जी बाय बाय। राजू भैया चेक कर लीजिए आपको रिटर्न कर दिया है। और सरिता बहन आपको मैंने रिटर्न कर दिया है। रिटर्न मैं किसी का नहीं रोकती हूँ। थैंक यू दीदी जी रिटर्न करने के लिए। वैसे तुरंत रिटर्न नहीं किया जाता, कम से कम 4-5 के बाद होना चाहिए। वैसे सही बात तो ये है राजू भैया कि 12 घंटा से पहले रिटर्न लेना ही नहीं चाहिए किसी से। भौजी कोरी सुना दो मुझे, लोरी सुना दे तुमको। अच्छा जी। हमारे देवर जी को नींद आ रही क्या? राधे राधे, जय श्री राम। इंद्र राम भैया राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। हंस लो हंस लो हंस लो।
खूब हंसो सब लोग। जय माता दी, जय माता दी। पता है राजू भाई, अभी हमारे 12 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। तो ये यूट्यूब नहीं कम कर रहा है। लोरी सुना दो तो नहीं तो सोएंगे को हम। अच्छा जी, कोई नहीं, हम जग रहे हैं तो आप भी जगते रहिए। राम राम दीदी, राम राम भैया राजू भाई, इंदर राम भैया। आप काहे हंस रहे हैं इतना? आपकी तो तबीयत खराब है, हंसना नहीं चाहिए आपको। आज आपके लाइव में गए थे तो आप तो तबीयत ही ठीक नहीं थी आपकी। राधे 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 राधे, राम राम। क्या करूं, जीवन नहीं, जीवन नहीं रहता है। क्या करूं, जीवन नहीं रहता है। मतलब इंदर राम भैया, जीवन नहीं रहता है? जीवन तो आपका है, तभी तो आप लाइव में आए हैं। ऐसे डराइए मत इंदर राम भैया, क्योंकि रात का समय है। आप लोग हमको अगर ऐसे डराएंगे तो हम बंद कर देंगे, सो जाएंगे। यहाँ इंदर राम भैया कह रहे हैं जीवन नहीं रहता है, मतलब भूत बन के आप कमेंट कर रहे हैं क्या? आपके लाइव में आने का मन किया तो मैं आ गया। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आपकी तबीयत सही नहीं है, आप दवा खा के आराम कर लीजिए। भौजी को उल्लू बना दिया। हाँ, बना दिया देवर जी। वैसे देवर नहीं बनाएगा तो उल्लू कौन बनाने जाएगा भाई। हम भूतों से नहीं डरते हैं बहन, लेकिन हम डरते हैं मेरे भैया, बहुत डरते हैं। और रात का समय है, इस समय तो बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। पहले बचपन में मम्मी लोग क्या कहती थी, सो जाओ नहीं भूत आ जाएगा, और हम लोग आंखें बंद करके सो जाते थे। राधे 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 राधे। आप खुद एक भूतनी हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक साधारण से इंसान हैं। मतलब हम आपको भूतनी दिख रहे हैं? कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, हम भूतनी दिख रहे हैं तो नहीं दिखेंगे अब। 35 साल का हो गया, कभी नहीं डरा हूँ। अच्छा जी, भगवान करें कभी ना डरिए आप।
आज आपकी लाइव में कोई पूछ रहा था कि आपकी शादी हो गई क्या। भाजी बुरा मत मानो, आप हमको भूतनी कह रहे हैं, इसीलिए हमने कैमरा बंद कर दिया। भी सीधा शान है, बिल्कुल भैया जी, आप तो निहायत सीधे हैं। राम 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 राम। तेरे चेहरे से नजर नहीं, क्या देखे हम। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी आपकी। सन 2025 में शादी हुई थी हमारी। हुई थी और हुई है सन 2025। तो अभी क्या हो गया? अभी तो हमको लग रहा है 26 ही चल रहा है। कौन सा चल रहा है भाई? सन 2025 में शादी हुई थी हमारी। अच्छा जी। ये नहीं समझ में आया। मुकालवा क्या है ये किया सन 2019 में? इसकी मतलब नहीं समझ में आया मुझे। इसका मतलब मुझे समझाइए इंदर राम भैया। मुकल्लावा किया। और जी सो जाओ। इंदर राम भैया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं समझ में आया। सन 2019 में क्या हुआ था? एक साल आई थी अभी मैं। अच्छा जी। वैसे भी लड़की तो ससुराल में अच्छी लगती है, मैके में नहीं। भाई मेरा तो यही सोचना है, बाकी तो अपनी अपनी सोच है। हाँ जी नींद का जी। वैसे भी भैया जी हम लोगों की आदत इतनी जल्दी सोने की नहीं है। इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है हमारी भी। अच्छा जी। तो समझाइए बुझाइए, आपस में समझदारी से बात करिए, उसमें क्या है भाई। समझ बूझ करके ले आइए।
ऐसे मायके में रहना अच्छी बात नहीं है। लड़की का ससुराल ही स्वर्ग होता है। मायका तो कुछ दिनों का ठिकाना है केवल, बस। क्या ससुराल और मायके में अंतर बताएं आपको? शादी से पहले एक ठिकाना होता है लड़की का, सिर्फ मायका। और मायका, मायका का मतलब पहले समझिए, मायका है क्या चीज़। जिस दिन लड़की का कन्यादान हो जाता है, दान की हुई चीज़ रिटर्न से जा कर के अगर उसी जगह पे हमेशा के लिए रुक जाए तो दोष लगता है। वो किसी को दान कर दी गई है कन्या, तो उसको अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। जिसने दान लिया है वो उसका अधिकारी है। ये अंतर है मायके और ससुराल में। और माँ बाप को भी दान की हुई चीज़ को रिटर्न नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर ससुराल वाले प्रेरित कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तब तो लड़की को मायके में बात करना उचित है, लेकिन उसका भी सलूशन निकालना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लड़की को हमारे हिसाब से मायके में नहीं रहना चाहिए। बाकी अपनी अपनी समझदारी होती है। 5 सालों से। सही बात है भैया। 4 दिन की ज़िंदगी है, सोच समझ के रहना चाहिए। वैसे भी किसी की ज़िंदगी बढ़ नहीं रही है, घट रही है एक एक दिन। खर्चा चल जाएगा, 4 एक बेटी के खर्चे नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता है। बिल्कुल किसी कीमत में नहीं चलता है। ये चीज़ तो मैंने देखा है आपके लाइफ में, तभी तो मैं कह रही हूँ। और देखिए, पुरानी कहावत कही गई है कि चावल सब लोग रख लेते हैं लेकिन उबाल करके भात नहीं रख पाते हैं। तो लड़का वो चावल है जो उसी घर के लिए बना है, और लड़की वो भात है जो कि ज़्यादा दिन तक रखी नहीं जा सकती है, चाहे जितना प्यार करने वाला माँ बाप हो। और माँ बाप का भी फर्ज होता है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उनके ससुराल में रहने में उनका सहयोग करें, उनको गलत सही सिखाएं। ये कोई बात नहीं है। बहुत सी लड़कियों की मम्मी को मैंने देखा है, बिटिया ये करो, बिटिया वो करो, बिटिया ये किया करो, वो किया करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की को भी समझना चाहिए। अब ये तो भैया जी कैसे समझ सकते हैं हम कि किस घर की थी, लेकिन समझदारी की बात तो यह है कि नहीं भैया जी, हम ये कब कह रहे हैं कि सब गलतियाँ आदमी में होता है। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम लेडीज हैं तो हम ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं होती है। आदमी कहीं कहीं गलत होता है, कहीं कहीं औरत भी गलत होती है। गुड नाइट भाभी जी, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। आप सो जाइए, आपको नींद आ रही है हमको लग रहा है। सही गलत की जहाँ बात आती है, ना आदमी सही होता है ना औरत सही होती है। सब समय समय की बात होती है।
किसी जगह पे आदमी सही है, किसी जगह पे औरत सही है, लेकिन कुल मिला के अगर दोनों की समझदारी हो तो समझ बूझ के रहना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी। वैसे भी ज़िंदगी दो पहिए की गाड़ी है, दोनों को साथ साथ मिल कर के चलना चाहिए। थोड़ा बहुत अच्छाई बुराई तो सब में होती है, ऐसी कोई बात नहीं कोई एकदम परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। खानदान गलत नहीं होता भैया जी, कुछ चीज़ें होती हैं अपना माइंड, किसी किसी का माइंड जो होता है या किसी के कहने में आ जाता है आदमी, बाकी ऐसा नहीं है। घर वालों को समझा बुझा के भेजना चाहिए, बाकी क्या करोगे, दुनिया है। नहीं जी, मेरे देखने से है, लगता है कि मर्द ऐसा कुछ नहीं है, गलत तो कोई भी हो सकता है। अभी तक आपके मायके रुकी हुई बेटी हैं, सही बात है। आदमी भी गलत होता है, औरत भी गलत होती है, ये तो समय निर्धारित करता है कि गलत उस समय कौन है। और थोड़ा बहुत गलती सबसे होती है, उसको भुला देना चाहिए। सन 2011 मेरे पिताजी मेरी माँ का मर्डर कर दिया। सन 2011 में मेरे पिताजी मेरी माँ का मर्डर कर दिया। बहुत परेशान हूँ मैं, क्या करूँ। सच बोलने वाले को कोई समझता ही नहीं है बहन, आजकल में। ऐसा कुछ नहीं है भैया जी, समय समय की बात होती है। हर समय जैसा नहीं होता है, जब समय अपना ख़राब होता है ना तो सब लोग उसमें हाथ धोने चले आते हैं। ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा है बहन। देखिए भैया जी, ज़िंदगी किसी एक के लिए नहीं होती है, हमारी ज़िंदगी हमारी खुद की है और हम अपने लिए जीते हैं, किसी और के लिए नहीं। अगर अगला हमारी बात नहीं समझ रहा है और हमको नहीं समझ पा रहा है तो हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ तो नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप अपने लिए जिए, खुश रहने की कोशिश करिए, बाकी जो भी है उसको बदला नहीं जा सकता है। और अगर आपसे हो पाए तो आप एक आध बार अच्छे से बात करके और देख लीजिए,
हो सकता है दिमाग बदल जाए। कोई कोई 1000 बार जा चुका है सवाल। हाँ तो भैया जी हम तो यही कहेंगे, फिर उनसे कह दो कि भैया या तो फिर आ जाओ या तो छोड़ दो। नहीं बात बनने के लिए तैयार है तो अपनी लाइफ ख़राब करने से क्या फ़ायदा। पहले बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बनने के लिए तैयार ना हो तो फिर क्या किया जाए। अब पापा हैं आपके भी? इंदर राम भैया पापा हैं अभी? हमारी लाइफ खराब हो गई, क्या करूं मैं। लाइफ तो जब झंझट में पड़ जाती है तो वैसे लगता है। पापा जी हैं आपके भी? पिताजी बैठे हैं मेरे, 76 साल के हैं। अरे राम राम, जिम्मेदारी इतनी है, करने वाला कोई नहीं है। यह सोचकर मेरा दिमाग
भाई अब क्या बताऊँ मैं इस बारे में। मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है आपके साथ में, क्या बताऊँ। जब कोई समझने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करेंगे आप। राधे 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 सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोई अच्छा रास्ता हो तो बताना बहन। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। चलो भाई 12 बज गए, आप सभी लोग सो जाओ। राजू भैया आप भी सो जाओ। छोटे भाई, पूरी फैमिली ही आपकी इधर उधर हो गई है।
12 गुड नाइट। 12 हो गया। जी भैया जी सो जाइए आप भी। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट भैया जी। कल मिलते हैं फिर बहन। बिल्कुल भैया जी बिल्कुल। अंदर राम भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे राजू भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी गुड नाइट। 12 सुनील। बिल्कुल बिल्कुल भैया। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप लोग भी सो जाइए। हम भी सोने जा रहे हैं।